Hello. So, Hi, sir. Am I audible now? yes, so, Yes, Audible? sir. sir. Yes. Yes, sir. Okay. All right. Just wait for 2 minutes. I'm going to start the session now. Just wait. Okay, sir. Okay, sir. Okay, guys. So yesterday we have seen the classification of numbers, right? Divisibility rule, LCM, HCF. Okay. Okay. So can anyone tell me how we calculate the HCF, LCM? For calculating LCM, Guys, am I audible or not? You can write in the chat box. yes, you are audible. Yes. Audible. Okay.
Okay, so yesterday we have seen the classification of numbers, then LCM, HCF. Now, today we will be talking about the, first of all, squaring. Okay, how to find square of any number easily. Okay, this is my pre-assumption that every one of you know the square up to 10. Okay, what is 8 square? 8 square. 64. Good. What is 9 square? 81. 81. 81. Good. If I ask you what is 96 square, Use calculator. then it will take some time, right? Yes. Okay, calculated. Okay, so now we will talk about how to find the square of any number easily. You don't need to use calculator, Shivam. See, how to find a square which are near about 100. First of all, we will talk about the numbers which are near about 100. Near about 100. Okay. See, before starting the session, I would like to share something with you that you need to learn square up to 30. Okay, then you are able to find the square of any number within seconds. All right, so you need to learn square up to 30. I'll give you the trick also how to learn these squares. Okay, so don't worry about that. Okay, so now let's talk about the trick. The near about 100. Okay, so the 96, let's suppose we need to find the square of 96. So 96 is 4 less than 100. So what we do here, we will just subtract that deviation from the number itself. Okay, this is my first part of the answer, and the second part would be I will take that square in the second part. Okay, I need to check once again, listen very carefully what we are doing here. We are just comparing our number with base. Near about 100 means base is 100. Good afternoon, Gautam. Okay, so here base is 100, so we will compare this 96 with 100. So deviation from the 100, or we can say the distance from the 100 is -4. So 96 minus 4 will be the first part of the answer, and the second part will be that 4 square. So what will be my answer? Just solve it. 96 minus 4 gives you 92, and 4 square 16. This is my answer. Easy. Any doubt? सर वो डिवीजन का साइन नहीं था. कौन सा? So can you repeat ब्रैकेट it क्लोज के बाद. please? नहीं, ये पार्टीशन मैंने किया है, इसको पार्टीशन ले लो. ठीक है? ओके, ठीक है सर. This is my first part of the answer, and this is my second part of the answer. This is not division, okay? So this is my answer. 96 minus 4 gives you 92, and 4 square is 16. So can we take another example, please? Yes. Why not? 95. 95. Let's say 95 is the number, and again we will compare it with 100. So 95 minus 5. -5 and 5 square. And 5. So what is the answer? 9025. Very good, Shyam. 9025 is the answer. Easy. You can take the another number. Let's say we need to find the square of 91. Okay. So we need to check it as how much less than 100. Okay. So the base is 100. So we have to compare it with base. हेलो So सर, 9 less than 100. ये वाला क्वेश्चन दोबारा Yes. रिपीट करना. 91. This one? सर 96 स्क्वायर वाला क्वेश्चन. हाँ, तो देखो 96 को मैंने क्या किया, 100 से कंपेयर किया. ठीक है, कितना कम है? 4 कम है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें से 4 लेस कर दिया, और दूसरे पार्ट में 4 स्क्वायर. तो 96 में से 4 लेस करोगे तो क्या मिलेगा? 92, विच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर मीन 16. सिंपल. ठीक है, फिर से देखो 91 स्क्वायर कैसे होगा? यस, ऑल डिजिट्स बिलो 100. यस रूपाली. तो 91 माइनस 9 एंड 9 स्क्वायर. ठीक है, कंपैरिजन हमेशा 100 से, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमेशा नंबर में. ओके, सब भी आ जाएंगे. एक के बाद एक चलते हैं. सुरेंद्र पाल,
ठीक है. So 91 minus 9 कितना हो जाएगा आपका 82. That will be 82 and 9 square gives you 81. So 8281 is the answer. Okay. Let's talk about the number more than 100. Let's talk about 105. Okay. So 105 is actually what? 5 more than 100. Again, comparison is with 100. So it is 5 more than 100. So 105 plus 5. This will be the first part of the answer. And next part will be 5 square. See, 105 is more than 100. Huh? That's why I'm adding here. And in the previous examples, we are just subtracting here. Okay. So this is going to be my answer. That is 11025. Is that okay to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good. Okay. Now you can ask one more thing. Sir, that it is applicable to each and every number? Yes, it is applicable until you are able to find the square of this deviation easily. बात आ रही है समझ में? Yes. अगर मैंने कहा आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई? यू कैन फाइंड द स्क्वायर फ्रॉम 70 to 130 इजीली. Yes. भाई जब तक आप ये स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो, तभी आपकी ये ट्रिक काम करेगी. काम तो 31 के लिए 32 सबके लिए करेगी. बट मेंटल मैथमेटिक्स का यही मीनिंग है दैट यू हैव टू डू इट विद इन सेकेंड्स. ओके. सो ये स्क्वायर पार्ट का स्क्वायर जब तक आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो, यहाँ तक ये आपके ट्रिक आप यूज कर सकते हो. ठीक है. सर क्वेश्चन Okay. रिपीट करना प्लीज. 105 वाला 105 नहीं है समझ में? ये मतलब comparison 5 कहाँ से ऐड किया सर? सॉरी. सर जो मतलब यहाँ पे पहले तो मतलब 100 में से माइनस करते थे ना, तो ये मतलब जो 105 है तो इसमें +5 क्यों किया है? देखो करना क्या होता है, ये जो 90 जैसे सपोज पहला एग्जांपल देखो, 96 का स्क्वायर निकालना, तो कंपेयर किया 100 से. कितना कम है? 4 कम है, तो इसलिए 4 घटा दिया. यहाँ 105 था, ये 5 ज्यादा है, इसलिए 5 ऐड कर दिया. दैट्स इट. सिंपल रीजन. ओके सर, क्लियर है, थैंक यू. ओके. हाँ ठीक है. अब देखो और एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स सपोज इफ आई नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 112. ठीक है. आई नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 112. नाउ सो अगेन वी विल कंपेयर आवर नंबर विद 100. ओके. कंपैरिजन हमेशा 100 से होगा. ठीक है. कितना ज्यादा है 100 से? 12. सो वी विल जस्ट ऐड 12 हियर. दिस विल बी फर्स्ट पार्ट ऑफ माय आंसर and the second part would be 12 square. Okay. Now 112 plus 12 gives you 124, and this part is 12 square is nothing but 144. Okay. तो ये आंसर नहीं होने वाला है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है ना, ये जो बाद वाला पार्ट है, दिस मस्ट बी इन 2 digits only. So this one will carry through this part. So 124 plus 1 125 and 44. ये चीज आई समझ में? द डेविएशन पार्ट जो जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं बाद में, दैट मस्ट बी इन 2 digits ओनली. जी सर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Good. Okay, one more example. Okay, then tell me the square of 96. What will be the square of 96? Go for it. 9212. Very good, Ankush, Jatinder, Apneet, good, Dev, Ayush, Vikash, Akshay, very good, Vishali, Smriti, correct. 9216 is the answer. Okay, good, very good. Okay, find the square of 98. 98. I have shared the PPT in your official group, LPU Live. You can just download the LPU Live from the Play Store. Okay, there is a group of this class. 98, 9604, 9604, very good. Yes, everybody is giving the correct answer. Great. So again 98, we will compare this 98 with 100. So that will be 98 minus 2. So this will be my first part of the answer, and the second part would be 2 square. Okay. So 98 minus 2 gives you 96, and 2 square will be 04, not single 4. Okay. 964 is incorrect. 9604 is correct because this part must be in 2 digits. So I hope it is clear now.
Yes, sir. Another example, more than 100. Low G, 108. Find the square of 108. 108 plus 8, 116. 8 square, 64. This is my answer, 11664. Easy. You can do it mentally. Okay, Yes. do one thing. Do not use pen, paper. Just do it mentally. Find the square of 109. Do it mentally. Do not use pen, paper. 111,881. Yes. Very good. Abhishek, good. Tajveer, Shreyas, Yashraj, very good. Apneet, Ayush, good. 11881. Very good. So 109 plus 9 gives you 118 and 9 square 81. Okay. 11881. If you want to ask anything, then only you can unmute yourself. Otherwise, please mute yourself. Okay. 3-digit number, the second part. Yes. Coming to that. This is 3-digit. Okay, let's assume we have a number like 195. We need to find the square of 195. Now here we will take base as 200 because this number is near about 200. Clear? Okay, 200. Now 200 is 195 is near about 200. So what we do here, again, I will compare the number with base, which is 5 less than base. So I will just subtract 5 from it. Okay. And in the second part, 5 square will be the answer. Okay. But one most important thing here, we need to multiply this by 2. Okay. When the base was 100, we are multiplying with 1. Here we are multiplying with 2. So simple as it is, 190 into 2. And you need to multiply it by 2 only in the first part, not in the second. Okay. So this is going to be the answer. 190 into 2, 380. So 38025 will be the answer. Yes, Savita, good. सर सो जैसे अगर नंबर हमें 395 होगा 400 में से तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे Sorry? like the number is 395 so we will do 395 minus 5 into 4 पर ये आपका साउंड बड़ा कम आ रहा है, बहुत ही लो आ रहा है. So actually he's saying that suppose if we have a number 395, then do we have to subtract the number 395, from... so base will be 400, so we'll multiply by 4. Simple. ओके सर यही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. अगर बेस 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है. बेस अगर 300 लेके चलोगे, so you have to multiply by 3. तो ये एक यूनिवर्सल मेथड है. लेट्स टेक द डिजिट 138. ओके, उस पे भी आते संतोष, आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. जैसे बेस मैंने ले लिया 300 एंड वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 306. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया दैट हाउ यू कैन फाइंड द स्क्वायर नियर अबाउट बेसिस. अब जैसे 138 पूछा संतोष ने, उस पर भी आएंगे हम, ठीक है. पहले इसको समझ लेते हैं. सो व्हाट वी डू हियर, 306 प्लस 6, ठीक है, एंड हियर 6 स्क्वायर, but this is to be multiplied by 3 since the base is 300, so we'll multiply by 3. Okay, so 306 plus 6 gives you 312 into 3. Okay, and this is 6 square 36. So this will be 300 into 3 900 and 12 into 3 36. 936 36. This is the answer. Okay, but hardly he'll ask you the square of these kind of numbers. Generally 2-digit number up to 100, that is most important. Okay, that is most important. So now I'm telling you how to find the square of. We can take base as 50 as well. Okay, so we can take base as 50. सर स्लाइड बैक करना. स्लाइड बैक नहीं है, मैंने डिलीट कर दी है स्लाइड एक्चुअली. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. क्वेश्चन सर देखना था 306 वाला. 300 वाला लो, यहाँ से लिख लो 308 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है. देखो प्रोसेस सब में सेम है. अगेन हम क्या कर रहे हैं, मैं बेस इसमें ले लूंगा 300, ठीक है. बेस 300 है, तो अब ये 8 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसमें 8 ऐड ऑन कर लेंगे और यहाँ पे 8 स्क्वायर दूसरे पार्ट में, ठीक है. बट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 ऑल्सो. यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है.
जब बेस 100 था वी वर मल्टीप्लाइंग बाय 1, बेस 200 हुआ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन दिस केस। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 318 16 16 3 48 and 948 948 and 8 square is 64. So this is your answer. Okay, now coming to base 50, if I need to find the square of let's say 56 का मुझे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन मैं चेक करूंगा ये इससे कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, मोर है। ठीक है, तो मोर है तो फिर क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। तो 56 + 6, ठीक है, अगेन 6 स्क्वायर, बट दिस हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 0.5, दैट्स इट, इजी। सब में वही काम करना है। ठीक है, सब में वही काम करना है। तो 56 + 6 कितना हो गया आपके पास, 62। 0.5 का मीनिंग होता है हाफ, सो जस्ट हाफ इट, हाफ ऑफ 62 and 6 square 64, 36. So what will be the answer? 3136. So I hope अब आपको जनरलाइज एक आइडिया आ गया होगा कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली आप बेस 150 लेके भी कर सकते हो। ओके, बेस 150, उस केस में क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो होगा 1.5। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एनी अदर डाउट इन केस सर ऑफ सर रिपीट करवाना। सॉरी, रिपीट करना है? यस सर। कौन सा वाला रिपीट करें, 50? सर 56 वाला। 56, देखो 56 है तो मैंने देखा कि इससे नियरेस्ट नंबर जो इजीएस्ट नंबर है वो 50 है। ठीक है, अब 56 जो है वो 50 से 6 ज्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 6 ऐड करूंगा और दूसरे पार्ट में 6 स्क्वायर, जैसा अब तक हम कर ही रहे थे। ठीक है, बट ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना, ये यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। 0.5 का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो होता है हाफ। 0.5 मतलब आधा, 1/2। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट को हाफ कर दूंगा विच इज 62। 62 का हाफ हो गया 31 एंड सेकंड पार्ट इज 36। So whenever we are taking base 50, the multiplication factor would be 0.5. Okay? यस सर, क्लियर है। So I hope it is clear now. So इससे Yes, आप sir. प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, एक और मैं शॉर्टकट बताता हूँ, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स विच आर एंडिंग विथ 5। स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, बिकॉज ये जनरली यूज होते हैं इसलिए इनको जानना भी जरूरी है। एंडिंग विथ 5। स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंडिंग विथ 5। फॉर एग्जाम्पल 327 को कैसे सॉल्व करोगे, 300 लेके कर सकते हो या फिर 350 लेके कर सकते हो। ठीक है, number ending with 5. Okay, how to find the number ending with 5? Let's say 15 is there, 25 is there, 35, 45, 55, 65. Okay, I need to find the square. Okay, I need to find the square of all these numbers. So how do we calculate? Okay, so if any number is ending with 5 now, its square always ending with 25. ये हमेशा 25 से एंड करेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, एंड Yes, sir. द रिमेनिंग पार्ट 1 इज टू बी मल्टीप्लाई विद द नेक्स्ट नंबर। एक के बाद क्या आता है, 2। तो 1 into 2, 2. So just to put 2 here. 2 into 2, 225 is the answer. Okay. Similarly, 25 square. So it is going to be end with 25. This is fixed here. Last 2 digits will be 25. And the number next to 2 is 3. So just multiply these two numbers. 3 into 2 gives you 6. 625. Easy. Okay. Tell me square of 35. 1225 sir। 1225. Yes, very good. 1225. Okay. Square of 45. 2025. सर 2025. Very good. 4 5 is 20. Okay. Then 5 6 is 30. 25. 6 7 is 42.
25. So I hope it is clear now, okay? How to find the square which is ending with 5. Very good, Ayush, Harmanjot, everyone. Very good. You're doing great. You can just note down it or just take the screenshot, okay? Because we have less time here, so you can take the screenshot for your understanding. Excuse me, sir. I want to know the exam pattern of analytical skills. Is it MCQ pattern or like objective? Yeah, the question would be based on MCQ only. Means no subjective questions will not be there. Sorry? So no subjective questions, only objective questions. No, only MCQ. Multiple choice question will be there. 4 options will be given and you have to choose the correct one. That's it. And the paper weighting means it will be of 80 marks only. See, that depends on the paper. Actually, I don't know the exact structure of the long distance. I will confirm once and then I will tell you in the group. Okay? Okay. And sir, I want to know the day sheet also. Is it commencing from 9 December? Or Sorry? it gets postponed? These kind of questions we can discuss after the session. Is that okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, Okay. thank you. If you have any kind of question like this, so we can discuss after the session, okay? All right. So now we have talked about the square. Now unit digit is important here. Unit digit, how to find unit digit of any number, higher power, okay? Attendance back end से अपने आप लग जाती है. Those who present in the class, they will be marked present. Okay. Now unit digit. Okay. For example, if I have a number 8357, okay. So what will be the unit digit of this number? So unit digit means the rightmost bit, which is 7. Clear? This is my unit digit number. Okay. If I ask you what is the unit digit of 2 raised to the power 3? 8. 2 raised to the power 3. 8. That will be 8 because we know 2 raised to the power 3 is 8. Okay, simple. Okay, if I ask you what is the unit digit of 2 raised to the power 30, then it is hard to answer, isn't it? It is very hard to answer how to solve this kind of question where we need to find the unit digit. Okay, so what we do actually to find the unit digit, we have 3 simple steps. Step number 1. What is step number 1? Divide the power by 4. Okay, point number 1. Point number 2, take the remainder. Whatever remainder we will get, take the remainder in place of power. In place of power. Okay, point number 3. If remainder is 0, you can just note down these points. If remainder is 0, put power is equal to 4. Okay, these are 3 simple steps to find out the unit digit. Okay, with the help of unit digit, you don't need to note down the cyclicity. You don't need to understand these 3 simple steps. Why we are dividing by 4? Because the cyclicity of 2 is 4. Okay, so हम इतने ज़्यादा explanation नहीं जाएंगे. So can you repeat this? I was not able to hear you. Okay, these are 3 simple steps to find the unit digit of higher power. You can just take the screenshot of this. I will apply it in the question. Okay, you can just note down it, or Okay, sir. you can just take the screenshot. So first step is divide the power by 4. Then take the remainder in the place of power. If remainder is 0, put power is equal to 4. Okay. Now look at this question. I will just apply these 3 steps. Sure. For example, if I need to find the unit digit of 2 raised to the power 30. Okay, so what we do? What is the step number 1? Divide the power by 4. So what is power? Power is 30. Divide by 4.
Okay, if I divide it by 4, this will goes 4 7 is 28 and 2 is remainder. This 2 is what? This 2 is my remainder. Clear? 4 7 is 28 and 2 is remainder. I hope ये सबको आता होगा. ठीक है? Yes, sir. Now, just take this remainder now. Look at the second. Take the remainder in place of power. अब मैं इस 30 को रिप्लेस कर सकता हूँ 2 से. So 2 raised to the power 2 and this is my answer 4. So 2 raised to the power 30 end करेगा 4 से. Yes. Easy. Yes, sir. करना कुछ नहीं है. पावर को डिवाइड करो 4 से, जो भी रिमाइंडर आया पावर की जगह पे उसको ले जाओ. ठीक है. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर ले जाओ 4. सिंपल एज इट इज. देखो 2 रेज टू दी पावर 20 है मान लो. ठीक है. 2 रेज टू दी पावर 20 है. तो इसके हम क्या करेंगे? पावर इज डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर 0. यहाँ पे देखो 20 is completely divisible by 4, so remainder would be 0. Clear? Now note down the point number 3. If remainder is 0, put power is equal to 4. So now my question would be 2 raised to the power 4 directly. So this is going to be my answer. 16. 16 means ending with 6. Yes, correct. Very good, Vikas, Rohit, Shivam. It is applicable for each and every number, Ayush, not for only 2. Okay, I'll give you some more examples. Okay, let's say I need to find the square of, I'm giving you one more example, 1 2 2 raised to the whole power 3, for example. Okay, so basically we are doing 1 2 2 into 1 2 2 into 1 2 2, and I need to find its unit digit. So if I'm interested in unit digit only, so I will just check their unit digit only. तो मुझे तो इससे लेना देना है ना, तो केवल मैं क्या लूंगा, यहाँ से 2 ले लूंगा, यहाँ से भी 2 ले लूंगा, यहाँ से भी 2 ले लूंगा. तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? 2 का क्यूब. ठीक है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या बन चुका है? 2 raised to the power 3. तो दिस इज माई आंसर 8. क्लियर? कहने का मतलब ये है, अगर कोई आपके पास बड़ा नंबर आ गया, मान लो अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ गया जैसे 5 1 3 4 रेस टू दी होल पावर 2 9 5 6, ठीक है, ये आ गया, तो आपको इस 5 1 3 से कोई लेने देना नहीं है. यू हैव टू जस्ट स्किप दिस 5 1 3 and this question could be written as 4 raised to the power 2 9 5 6. Clear? And now divide power by 4, take the remainder in place of power. Okay, तो अब क्या करना होता है? 2 9 5 6 को डिवाइड करो 4 से, क्या रिमाइंडर आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा. ठीक है. मैंने जल्दी कैसे बता दिया? क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, द लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. यस सर. अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा, मतलब रिमाइंडर 0. एंड इफ रिमाइंडर 0, put 4 in place of power. Okay, so answer would be 6. 4 raised to the power 4 होता है आपका 6. Yes, Vikas, correct. Any doubt? सर ये ऊपर वाला हाँ, तो 4 is to power 4 equals to 6, ये कैसे आया सर? देखो 4 raised to the power 4 जो होता है, देखो मैंने ऐसे किया 4 into 4 into 4 into 4. ठीक है. अब मुझे पता है 4 4 जो क्या होता है 16, और ये 4 4 जो भी क्या होगा 16. अब 16 और 16 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे लेना देना केवल 6 से है, तो 6 into 6 36, 36 मतलब 6. ठीक है. I hope it is clear now. Okay, now I'm giving you certain examples so that you can understand it better. Let's suppose we have 27 whole raised to the power 5 2 3. Find the unit digit of this number. Go for it.
Okay, Vikas is saying 3, Abhishek 3, Arun is 3, Aditi 3, Chandrukas, Satnam, Abhishek. Okay, everyone is getting with 3. All right, good. So what is my first step? 523 divided by 4. Okay, so 4 1 is 4, carry 1, 12, 4 3 is 12, 0. So 3 is the remainder. Very good. Okay, remainder is 3, and now take this remainder in place of power. So now my question would be 27 raised to the power 3 or 7 raised to the power 3. Okay, and 7 raised to the power 3 is actually what? 7 into 7 into 7. अब 7 7 is 49. So 49 से लेना देना नहीं है, केवल 9 से लेना देना है. ठीक है, then 9 into 7 63. तो 63 से लेना देना नहीं है, केवल 3 से लेना देना है. तो 3 is the answer. Is that okay? Yes, sir. All एक बार right. फिर से Good. मैं और एग्जाम्पल से एक बार आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है, let's assume the number is 2 5 7 9 whole raised to the power 226. We need to find the unit digit of this number. ठीक है, कैसे करोगे? कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ. देखो करना क्या होता है, सबसे पहले तो देखो मुझे इस 257 से कुछ लेने देना ही नहीं, बिकॉज मुझे केवल यूनिट डिजिट चाहिए. सो आई विल जस्ट रिमूव दिस पार्ट. अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? 9 raised to the power 226. सबसे पहली बात तो ये है. ठीक है, अब स्टेप क्या करने थे? मैंने 3 स्टेप लिखवाए थे कि यू हैव टू डिवाइड द पावर बाय 4. ओके, एंड टेक द रिमाइंडर. रिमाइंडर कैसे निकलेगा? 4 से डिवाइड करो. 4 5 20, बच गया 2 26. 4 6 से 24, बच गया 2. सो 2 विल बी द रिमाइंडर. ठीक है, नाउ टेक दिस रिमाइंडर इन प्लेस ऑफ पावर. अब आप 226 की जगह पे केवल 2 रख सकते हो. सो 9 raised to the power 2, which is 81. 1 is the answer. Yes, majority is giving the correct answer. Good. Yes, 26 ले सकते हो बिल्कुल विकास, बिकॉज 4 का डिविजिबिलिटी है कि लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए 4 से डिविजिबल. तो केवल 26 में चेक कर लो, बेटर ऑप्शन है. ठीक है, सही कहा विकास ने कि लास्ट 2 डिजिट्स ही हम चेक कर ले. तो 26 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 6 से 24, बच गया 2. तो केवल मुझे लास्ट के 2 डिजिट में ही चेक करना है. ठीक है, गुड. सर यस, सर 4 से क्यों डिवाइड करते हैं इतने पावर को? देखो 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं, इसका एक रीजन होता है. एक्चुअली द रीजन इज, अगर आप 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अगर आप ये देखोगे तो ये एंड कर रहा है 2 से, ये एंड कर रहा है 4 से, ये एंड कर रहा है 8 से, एंड कर रहा है 16 से. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप साइकिल चेक करोगे ना तो यू विल गेट द सिमिलर 32, देन 64, देन 128, देन 256. ठीक है, फिर क्या मिलेगा आपको? ये 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 8. फिर मिलेगा आपको 512, फिर मिलेगा आपको 1024, फिर मिलेगा आपको 2048, फिर मिलेगा आपको 4096. तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो देखो ये यूनिट डिजिट जो है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है. 4 हर 4 के बाद, हर पावर 4 के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब जो पावर जो है 12 की है, एंड कर रही है जिससे, वही एंड करेगा 8 से, वही एंड करेगा 4 से. ठीक है, तो अगर मुझे 2 to the power 13 पे जंप करना है तो सीधे सीधे मैं क्या चेक करूंगा? 8 9 10 11 12 एंड 13. ठीक है, तो मैं सीधे सीधे क्या जंप करूंगा कि 4 4 की कितनी साइकिल्स बन रही हैं. ठीक है, तो 13 तक कितनी साइकिल्स बनेंगी? इसका मतलब मुझे 13 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से. 4 3 जो 12, 3 साइकिल बन गई, मतलब
एक ये पूरी साइकिल हो गई, 4 4 8 और 4 12। सो नेक्स्ट जो बचा, मतलब जो एक रिमाइंडर जो हम बोल रहे हैं ना, वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि रिमाइंडर को अब यहाँ लेके जा रहे हैं। सो 2 रेज टू दी पावर 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 रेज टू दी पावर 13 यहाँ आएगा, ठीक है, और 2 रेज टू दी पावर 1 है यहाँ पे। तो दोनों की जो है पावर सेम। इज दैट क्लियर कि क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से? यस जी सर। थैंक यू सर। ओके, तो साइक्लिसिटी 2 की भी ऐसी है, 3 की भी ऐसी है, ठीक है। जिसकी साइक्लिसिटी, इसकी साइक्लिसिटी हम कहेंगे कि 2 की साइक्लिसिटी 4 है। द साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। ओके, हम ये कह सकते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। इसी तरीके से हम 3 की साइक्लिसिटी देखें, वो भी 4 आएगी, ठीक है। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, बट जस्ट गो विद दिस मेथड ओनली। जिनकी साइक्लिसिटी 2 है, जैसे हम बात करें 9 की, ठीक है। 9 को अगर आप गौर करो तो 9 कैसे होता है, 9 1 जो 9, 9 9 जो 81, फिर आ जाएगा 9 क्यूब आएगा, वो एंड करेगा फिर 729 पे। फिर अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो एंड करेगा 1, ठीक है। तो 9191, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी 2 है। बट आपको इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी मेथड से जाओ। क्या मेथड है? डिवाइड पावर बाय 4, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, टेक रिमाइंडर, इन प्लेस ऑफ पावर, इन प्लेस ऑफ पावर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर रिमाइंडर 0 आया, इफ रिमाइंडर इज 0, टेक पावर इज इक्वल टू 4। Only these 3 simple steps. These 3 steps. You can again note down it. Divide power by 4. Take the remainder in place of power. If remainder is 0, take power 4. अब रिमाइंडर 0 का देखो क्या कंसेप्ट है। जैसे मैं बता रहा था कि 2 रेज टू दी पावर 1, 2 रेज टू दी पावर 2, 3 एंड 4। तो रिमाइंडर 0 देखो मुझे यहाँ पे मिलेगा। रिमाइंडर 0 मुझे 2 रेज टू दी पावर 8 में मिलेगा। रिमाइंडर 0 मुझे 2 रेज टू दी पावर 12 में मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? रिमाइंडर 0, ठीक है। तो सीधे सीधे मैंने उसको 2 रेज टू दी पावर 4 वाला कर, इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ 4 से। इज दैट ओके नाउ? Yes, sir. यस सर। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। तो आपको ये चीजें फॉलो अप करनी है, ठीक है। मिल जाएगी क्लास की, उसी पे लिंक पे क्लिक करोगे, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। या इट वुड बी इजी नाउ। ओके, ग्रेट। Okay, now a few numbers are there which are ending with like 1. Let's say 21 raised to the power 57 and 56 raised to the whole power 192, or 225 raised to the whole power 3296, or 120 whole raised to the power 96. These are the number like 1. I'm talking about unit digit, huh? Unit digit So I have 1, one unit question. digit 6. Huh? I have one This question. gives you the same values, 1. This gives you the same value 6. This gives you the same value 5. This gives you the same value 0. Because these number, the cyclicity of these number is 0. देखो, अगर मैं 5 का स्क्वायर देखूं या 6 का स्क्वायर देखूं, 5 की इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो जरा क्या मिलता है आपको। If you look at the increasing power of 5, so you will get 5, 25, 125, 625, and so on. So every time you will get 5 at the end. Similarly, 6 का केस भी ऐसे ही है। 6 raised to the power 1, 6, 6 raised to the power 2, 36, 6 raised to the power 3, 216. Again, if you multiply by 6, you will get 6 again in the unit digit. Okay, so 1, 6, 5 and 0 ऐसे नंबर हैं जो कि एंड करेंगे इन्हीं नंबर से। Is that okay? Yes, यस sir. सर। Okay, I hope it is clear, right? Yes, sir. Okay. Yes, any doubt? No, sir. Okay, just go for it. 2, 6, 5.
1 raised to the whole power 9632 multiply by, good, multiply by 3120 whole raised to the power 2462 multiply by 1932 whole raised to the power 53. Find the unit digit of this number. Let's see who will solve it first. Okay, Vikas is saying 0. Manish 0. Smriti 0. Very good. Good observation. Very good. Excellent. Very good. Chandra Prakash, Anjali, good. Yes, 0 is going to be the answer because whatever comes from here, whatever, कुछ भी अगर यहाँ से आए, मुझे पता है ये एंड करेगा 1 से, ठीक है, ये एंड कर लेगा 0 से. And if now if I multiply any number with 0, you will always get 0 at the end. ये हमेशा आपको 0 मिलने वाला है एंड पे, ठीक है. आई होप ये चीज आपको समझ आई है. तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, आई होप ये क्लियर हुआ होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड, वेरी गुड. अब एक बात करते हैं रिमाइंडर की. रिमाइंडर ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है. रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आप देखो, जैसे 36 इंटू 25, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 7 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की. जनरली जब हम डिवाइड करते हैं 36 को 7 से तो क्या करते हैं, 7 5 35 एंड दिस वन इज कंसीडर्ड एज अ रिमाइंडर, है ना, यही होता था. अब मैंने क्या किया, मैं इसको 6 तक ले गया. 7 6 42, ठीक है, क्योंकि हम 5 तक ही ले गए थे, यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे मैंने 6 ले लिया. इससे क्या होगा, 7 6 42 and you will get a -6 number. Okay, -6. So this is considered as a negative remainder. ठीक है, इसको मैंने मान लिया नेगेटिव रिमाइंडर है. और कुछ एग्जांपल देख लो. इफ आई डिवाइड 25 by 4, so what will be the positive or negative remainder? The positive remainder would be +1. 4 6 24, बच गया 1. सो 1 हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर. बट अगर मैं 4 7 28 चला जाऊं तो 28 में से मुझे 3 लेस करना पड़ेगा to get the initial value 25. So this -3 will be my negative, very good, remainder. ठीक है. लो ये बताओ मुझे 35 by 11, what will be the positive or negative remainder? 35 divided by 11. 2 is positive. Very good, Shubham. That's your Apneet, good. 2 and -9, very good. 2 11 3 is 20 33, so 33 plus 2 35, and -9 would be the negative remainder. Okay. हाँ, अब यहाँ पे देखो एक गौर करने वाली बात है, आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है. अगर आप इन दोनों का सम करोगे ना तो आपको 4 मिल जाएगा. 1 प्लस विदाउट नेगेटिव साइन 1 + 3 4, 2 + 9 विदाउट नेगेटिव साइन 11. तो अगर एक 2 आ गया तो नेक्स्ट माइनस के साथ 9 होगा. ठीक है. अब इसका यूज कहाँ करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. 35 × 25 डिवाइड बाय 7. आई नीड टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस. सो एक तो तरीका क्या है कि आई वुड जस्ट मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज. 25 × 35, सो 25 5 जो 125, कैरी 12, 25 3 जो 75, 75 and 12 87, 875 कर लो, फिर 7 से डिवाइड कर लो. ये तो जनरल तरीका हो गया जो बच्चे करते हैं. ठीक है. हमें क्या करना है, आई विल जस्ट टेक द पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर. 7 5 जो 35, देखो 36 ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, 36, क्योंकि 35 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से. तो 36 लूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1. ठीक है. अच्छा, 25 का लूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21 and 4 आ जाएगा रिमाइंडर. ठीक है. पॉजिटिव रिमाइंडर की मैं केवल बात कर रहा हूँ अभी. यू कैन टेक द नेगेटिव रिमाइंडर ऑल्सो, इट्स अप टू यू. सो 7 5 जो 35, 1 रिमाइंडर बच गया, मैंने लिख लिया यहाँ पे. एंड 7 4 जो 24,
7 3 जो 21 एंड 4 रिमाइंडर बच गया. नाउ आई कैन यूज दीज द रिमाइंडर इन प्लेस. हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी. 4 यूज कर They're not audible. नॉट ऑडिबल. नो सर, अब सुनाई दे. No. सर अब सुनाई दे रहा है, Please पहले check नहीं now. सुनाई दे रहा था. अच्छा ठीक है. ये तो मैं ये कह रहा था कि आपने इंडिविजुअल नंबर्स के लिए रिमाइंडर्स निकाल लिए. ओके वेट, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल. 35 into 23 divide by let's say 6. Okay, I need to find the remainder in this place. Clear? So what we do actually, we will take either positive or negative remainder for the individual numbers. Okay, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा क्या रिमाइंडर आएगा बताइए. 35 को करूंगा 6 से डिवाइड, क्या रिमाइंडर आएगा? 5 -1 और 5. ओके गुड. या तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा या फिर आएगा -1. तो ये दोनों रिमाइंडर आ गए. ठीक है. अच्छा 23 के लिए बताइए क्या होगा. वेरी गुड. 5 एंड -1. इसके लिए भी 5 एंड -1. अब मैंने क्या बोला कि यू कैन यूज एनी ऑफ द रिमाइंडर. हर एक नंबर के 2 रिमाइंडर है, तो किसी को भी यूज कर लो नंबर की जगह पे. ठीक है. तो देखो सबसे इजी तो मेरे लिए यही रहेगा कि मैं छोटे छोटे नंबर उठाऊं, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. यहाँ से मैंने -1 उठा लिया, यहाँ से -1 उठा लिया. सो यू कैन पुट दीज रिमाइंडर्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 divided by 6. So -1 into -1 gives you +1 divided by 6. तो अगर मैं 1 डिवाइड करूं 6 से तो पूरा का पूरा रिमाइंडर बच जाएगा. तो ये मेरा आंसर होगा. Is that okay? It means Yes, sir. in order to find the remainder, Yes, sir. you can directly use either positive or negative remainder. It's up to you. ठीक है. आप देखो दोनों में +5 और +5 रख सकते थे. रख के देखो +5 रखोगे so you will get 5 into 5. देखो हरकिरत मैं क्या कह रहा हूँ कि आप नंबर्स की जगह पे ना कोई सा भी रिमाइंडर रख लो. यू कैन पुट रिमाइंडर्स, एनी ऑफ द रिमाइंडर्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स. ठीक है. अब मैं देखो यहाँ 5 रख के देखता हूँ और यहाँ भी मैं 5 रख के देखता हूँ. तो दोनों जगह पे मैं 5 रखूंगा तो क्या होगा. देखो 5 5 जो 25, 25/6, 25/6 अगेन रिमाइंडर क्या आएगा, वही आएगा 1. इज दैट ओके? So can we take a Yes, positive sir. and one negative? आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं. यहाँ से मैंने 5 उठा लिया और वहां से मैंने -1 उठा लिया. ठीक है. एक जगह से पॉजिटिव ले लो, एक जगह से नेगेटिव ले लो. फाइन. सो नाउ दिस विल बी -5. ठीक है. ऊपर क्या आ जाएगा, -5, नीचे आ जाएगा 6. कभी भी आपके पास अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव नंबर है, इफ यू हैव नेगेटिव नंबर इन द न्यूमरेटर, सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. So that will be my answer. 6 minus 5, 1 is the answer. Whenever there is a negative number in the numerator, ऊपर में अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो नीचे वाले से उसको हटा दो, कम कर दो. That will be our answer 1. ठीक है. So I hope it is clear now. One more example. Look at here. 723 into 51 divided by let's say 9. Okay. सो यू कैन फाइंड द नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर. एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 73 ले लेते हैं. ठीक है. 73. Clear? So if I take 73 here, so what will be the remainder in case of 9? If I divide by 9, 9 8 is 72 plus 1. Fine. And here 9 4 is 36, 9 5 is 45, 45 plus 6. ठीक है. कोई सा भी एक रिमाइंडर ले लो. ठीक है. कोई सा भी एक रिमाइंडर ले लो. +6 ले लो चाहे -3 ले लो. इट्स अप टू यू मनीष. ओके शुभा. गुड. अब नाउ इन प्लेस ऑफ दीज नंबर्स, You have 5 minutes 73 की remaining. जगह पे मैं 1 एंड इन प्लेस ऑफ 51 आई कैन यूज 6. ओके. सो 1 into 6 डिवाइड बाय 9. तो 6/9. अब देखो 6 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ आई विल गेट 6 एज द रिमाइंडर. 6 इज द आंसर.
बिकॉज 6 छोटा नंबर है 9 से, एक बार भी नहीं जाएगा कंप्लीट. करेक्ट. Yes, sir. ओके. 73 into 51 आप नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो. ठीक है. यू कैन टेक -3 हियर और इसको 1 ही रहने दो. ठीक है. तो देखो क्या होगा. You can put +1 or -3 instead of number, so you will get +3 -3 divided by 9. You will get -3 by 9. And as I told you, whenever you get a negative number in the numerator, you have to subtract it from the denominator. So final answer would be 6 again. 6. ठीक है. अब देखो इसका यूज कहाँ होगा. आप कहोगे इसका यूज कहाँ होगा. यूज देखो कहाँ होगा. अब बता सकते हो रिमाइंडर क्या होगा. व्हाट विल बी द रिमाइंडर. तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालना है 73 के केस में, जो कि हमने पीछे भी देखा था +1 आया था. ठीक है. तो 73 का क्या आया, +1 raised to the whole power 512. So you can directly use +1 in place of 73. So 1 raised to the power 512 divided by 9. So answer would be 1. तो समझ आया क्या कर. ठीक है. We will do the question based on this tomorrow. ठीक है. ऑलराइट. तो आई होप आज का टॉपिक आपकी समझ आया होगा. तो हमने क्या क्या चीजें देखी आज. स्क्वायर्स देखे, right? We have seen the unit digits and we have seen the remainder. All right. So I will share the PPT with you. There are some practice question in it. I think in one of the group it is already shared, but shared in the this group also. Send कर दूंगा on LPU live. Live पे भी मैं send कर दूंगा. ठीक है. No issue. Sir, WhatsApp group. Okay everyone. Thank you so much. Excuse me, sir. Okay, Yes. sir. Sir, I have a question. Yes, yes, yes. So when our exams are going to start? So actually there's a conflict between the dates. Many of the persons are saying that the exams are commencing from 9th of November. Actually, I 9th don't of have November. my earphone right now, so I'm not able to hear you properly. Do you have my number? क्रेडिट कार्ड बंद करवाना पड़ेगा. Okay, I'm sharing my contact number. In case of any doubt, you can ask me there. Okay. Because I'm not able to hear you properly. In case of any doubt, you can ask in the LPU live group. Okay. All right. Thank you, everyone. Thank you. You can leave now. Thank you sir, so much. कौन से Thank you, group sir. की बात हो रही है? Thank you, sir. Okay.